Very good afternoon to all of you. Now, what we had covered last class, I hope you have revised everything. So आज हम जो बात करेंगे, we will talk about price determination. ठीक है? So price determination के लिए market equilibrium we had shared that demand and supply forces. Yes, you remember? So demand and supply का interaction कैसे होता है और उसकी वजह से price का determination कैसे होता है. Okay? So the determination of price with respect to demand and supply that we will be sharing in today's unit. And this is this you will be able to connect very easily because अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको रियलाइज की प्राइसेस कैसे चेंज होती है. अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई उसकी सेम रहती है, तो प्राइस कैसे बढ़ जाती है. इफ द डिमांड रिमेन्स इफ डिमांड इंक्रीजेस and the supply of the product remains same, so you might have seen that how the prices increases. For example, टमाटर का प्राइसेस मार्केट में ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. व्हाई इज इट इंक्रीजिंग? बिकॉज सप्लाई उसकी लिमिटेड है एंड डिमांड इज इंक्रीजिंग. फेस्टिव सीजन आर अप्रोचिंग, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप विल बी मेकिंग food for them, other things. So demand is increasing, but supply is not increasing because monsoon की वजह से, transportation की वजह से, बाकी reasons. So that is why supply has not increased. But the demand is continuously increasing and that is why the prices are going up. So टमाटर जो कि 60 rupees per kg मिल रहा था, अब 90 rupees per kg भी मिल रहा है. At some places we are getting at 120 also. So the prices are going up. Reason being there's a gap between the demand and supply. Supply है उसकी कम है और demand उसकी ज्यादा है. So this is what we are going to share today. So you will find it very interesting once we'll start sharing. Okay. तो आज का जो यूनिट है, दिस विल बी मोर अबाउट demand, supply, and price determination. You know the factors which are responsible for demand. You know the factors which are responsible for supply. आप डिफरेंशिएट करते हैं कि इकोनॉमिक्स में डिमांड कैसे डिफाइन की जाती है और सप्लाई कैसे डिफाइन की जाती है. सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज नॉट जस्ट प्रोड्यूसिंग द गुड, it has to reach to the market. Yes, and the consumer should be able to buy that at a specific price. So ये supply होती है, आपको पता है. Demand for a good is, what is demand for a good? जब तक कि वो प्रोडक्ट मार्केट में आ कंज्यूमर उसको बाय नहीं कर लेता फॉर स्पेसिफिक टू डिराइव स्पेसिफिक यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तब तक वो प्रोडक्ट डिमांड नहीं होता है. कि डिमांड के लिए जरूरी है आपके पास अफोर्डेबिलिटी हो, आपके लिए यूटिलिटी हो प्रोडक्ट की, और आप में विलिंगनेस हो. यू शुड हैव विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन दैट प्रोडक्ट, देन ओनली इट इज डिमांड. यस. सो डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स हमने प्रायर क्लासेस में डिस्कस कर लिए. वी हैव डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ मार्केट आल्सो. हमने मार्केट की बात की है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट में प्रोडक्ट कैसे डिफरेंशिएट होता है, प्रोडक्ट की यूनिकनेस कैसी होती है, और देन वी हैड शेयर द प्राइस आल्सो. बट आज हम बात करेंगे कि डिमांड और सप्लाई, द चेंज इन द डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स जो हैं, उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई इंक्रीज होगी या कम होगी, या दोनों बढ़ेंगी या दोनों कम होगी, बोथ विल इंक्रीज और बोथ विल डिक्रीज, और उसका इम्पैक्ट प्राइस पे क्या होगा, एंड व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू शेयर टुडे. ओके. So आज this class will be devoted for two things. कि prices determine कैसे होती है मार्केट में. What are the factors that determines price of the good? Some products are priced at a higher level and some products are at a lower level. And sometimes it happens कि जो low price goods होते हैं वो भी expensive मिलते हैं मार्केट में. And some category of products which are high price goods, they may also decrease the price of the good. So क्या चीजें हैं जिसकी वजह से प्राइस गुड का हायर हो सकता है, लोअर हो सकता है. एक ही प्रोडक्ट का जो प्राइस एक मार्केट में डिफरेंट होगा, दूसरी मार्केट में डिफरेंट हो सकता है. ओके. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस क्लास. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डिमांड और सप्लाई का इम्पैक्ट प्राइस पर कैसे होता है, ऑन क्वांटिटी, हाउ द क्वांटिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द प्राइस. जो क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड है मार्केट में, वो कैसे चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द प्राइस. हाउ the price makes impact on the quantity demanded and supplied also. So both ways. कि डिमांड और सप्लाई में चेंज होने की वजह से प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड पे क्या इम्पैक्ट. सो विल बी शेयरिंग बोथ वेज. वन,
the change in the demand and supply and its impact on price to be, and otherwise that how the price increases or decreases and its impact on quantity demanded and supply. So this is what we will be sharing in today's class. This will be more through graphs to make you understand. आज हम graphs के through ज़्यादा इसको discuss करेंगे rather than text form में, because graphs डिमांड और सप्लाई के ग्राफ से ही आपको पता चलेगा कि प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है. अगर प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है या सप्लाई चेंज हो रही है, एंड टू व्हाट एक्सटेंट. So through graphs only you will be able to understand that the price of the good is increasing or decreasing, or its impact if the price of the good increases or decreases, and its impact on quantity, demand, and supply. Okay. So this relevance of this, ये क्यों आपको पता होना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी फॉर्म के लिए. बिकॉज डिमांड और सप्लाई प्राइस को डिटरमिन करते हैं. प्राइस फॉर्म्स की रेवेन्यू को डिटरमिन करते हैं, एंड प्राइस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कॉस्ट. अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्राइस गुड का बढ़ेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल प्रोड्यूसर इज नॉट गोइंग टू बेयर द कॉस्ट ना, दे विल पास इट ऑन टू द कंज्यूमर. सो अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो उसका रिस्पेक्टिवली प्राइस भी बढ़ जाता है. अब प्राइस बढ़ जाएगा तो देन इन दैट केस विल द कंज्यूमर गोइंग टू बाय इट और नॉट. अगर कंज्यूमर लेंगे तो उस केस में डिमांड और सप्लाई मीट होगी. अगर सपोज प्राइस increases and consumers they cannot afford to buy it, then in that case there will be surplus supply in the market, demand will be less. So price पे उसका क्या impact पड़ेगा, how the price will get impacted. So this is important. Apart from that you should also know about कि अगर कोई international player है, सपोज इंडियन फर्म है, वो चाइना से इंपोर्ट कर रही है, तो उसकी वजह से भी प्राइसेस मार्केट में चेंज हो सकती है. सो इंपोर्ट की वजह से, एक्सपोर्ट की वजह से भी प्राइसेस में चेंज एंड द क्वांटिटी डिमांडेड विल चेंज. तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑफर करेगी तो सब्सिडीज के केस में भी क्या होगा, सब्सिडीज विल आल्सो मेक इम्पैक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द गुड. सब्सिडीज में गवर्नमेंट कहेगी कि चलिए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज है तो 20 रुपीज हम आपको देंगे, आप कंज्यूमर से चार्ज मत कीजिएगा. So that means what is subsidy basically means? Subsidy means that government says that you may be producing at a high price, but we'll take care about some component. For example, आपका cost of production 100 रुपीज है, तो सब्सिडीज में क्या होगा, गवर्नमेंट कहेगी कि हम 20 रुपीज सब्सिडी दे रहे हैं. गवर्नमेंट विल से दैट वी आर गिविंग सब्सिडी ऑफ 20 रुपीज on every 100 rupees you spend. So on every 100 rupees you spend, 20 rupees subsidy will give. So that means कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो 100 ही रहेगी, बट 20 रुपीज आपको गवर्नमेंट देगी. और जब आप मार्केट में प्रोडक्ट लाएंगे, सो व्हाट विल हैपन टू द प्रोडक्ट व्हेन यू विल ब्रिंग इट इन द मार्केट, बिकॉज 100 रुपीज आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, बट आपको गवर्नमेंट 20 रुपीज दे दिया, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हो गई, 80 रुपीज. सिंस योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 80 रुपीज, तो इन दैट केस जब आप मार्केट में इसको सेल करेंगे तो आपकी मार्केट प्राइस क्या होगी. अगर पहले आप सपोज 120 रुपीज का सेल कर रहे थे, क्योंकि 100 रुपीज तो आपकी कॉस्ट थी और 20 रुपीज आपका प्रॉफिट आपने ऐड करके 120 पे बेच रहे थे. यू वर सेलिंग एट 120 बिकॉज 100 रुपीज वॉज योर कॉस्ट एंड 20 रुपीज प्रॉफिट यू वांटेड टू गेन. सो यू वर सेलिंग एट सेलिंग प्राइस वाज 120. नाउ सिंस गवर्नमेंट हैज गिवन यू 20 रुपीज, तो आपकी कॉस्ट कितनी हुई, 80 रुपीज. अगर इसमें 20 रुपीज का प्रॉफिट भी आपने ऐड कर दिया, so the total price, selling price will be 100 rupees. So before subsidy, what was the price of the good you were selling? Was 120. Or after subsidy, the price of the good is 100 rupees. So अगर आप मैं rather than 120 पे अगर मैं 100 rupees का good बेचूंगी, तो definitely my consumers will increase. So the demand of the product will increase. So subsidies का impact price of the good पे क्या होता है, demand पे क्या होता है, supply पे क्या होगा. What will be the impact on supply? Since government is giving me subsidies, so demand भी बढ़ेगी और साथ में supply भी बढ़ेगी, क्योंकि my cost of production will be relatively less. तो ये subsidies का impact पड़ता है प्राइस पर. उसी तरह से अगर गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर दे, टैक्स इम्पोज कर देगी तो क्या होगा, उल्टा होगा. इट विल बी रिवर्स केस. तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, इफ सपोज so in the case of taxes, what will happen in the case of tax? अभी सब्सिडी में हमने बात किया
कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपीज थी, गवर्नमेंट ने आपको रिबेट दे दिया 20 रुपीज का, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट होगी आपकी 80 रुपीज। तो इफ यू एड 20 रुपीज मार्जिन ऑल्सो, प्रॉफिट ऑल्सो, आप कितने पे सेल करेंगे 100 रुपीज। बट इफ गवर्नमेंट वॉज नॉट ऑफरिंग यू सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज नहीं ऑफर की होती तो दिस गुड कॉस्ट वुड हैव बीन 100 रुपीज। आप इसमें 20 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करते तो यू वुड हैव बीन सेलिंग एट 120 रुपीज। आफ्टर सब्सिडी यू सेल एट 100 रुपीज। तो डेफिनेटली 100 रुपीज चीपर है ना कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर विल बी बाइंग मोर एट 100 रुपीज रादर देन एट 120। तो इसकी वजह से क्या होगा, सब्सिडीज की वजह से डिमांड गुड का बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा एंड साइमल्टेनियसली प्रोड्यूसर की कॉस्ट जो है वो भी कम हो गई। प्रोड्यूसर कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम 120 टू 100 रुपीज, तो सप्लाई विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज डाउन। सो सप्लाई सब्सिडी में बढ़ जाएगी और डिमांड भी रेस्पेक्टिवली बढ़ जाएगी। What will happen in the case of taxes? Taxes, in the case of taxes, government imposes taxes. So 100 रुपीज आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट कहती है हर 100 रुपीज पे will impose 20 रुपीज का टैक्स। So if the government imposes 20 rupees tax, your cost of production goes up to 120। आपकी cost of production कितनी होगी, 120 होगी। अब since your cost of production is 120 rupees, then in that case अगर आप इसमें 20 rupees का profit add कर दिया, तो what price you will be selling in the market, 140। जो प्रोडक्ट 100 रुपीज का 120 का होना चाहिए था, दैट इज सेलिंग एट 140 रुपीज। इट हैज बिकम एक्सपेंसिव। सिंस इट बिकम्स एक्सपेंसिव, कंज्यूमर्स की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। So taxes increases the price of the good, subsidies decreases the price of the good. Yes. So if taxes increases, that means you will be going for less of the product, and subsidies results in decrease in the price of the good. You will be buying more of the product. ठीक है। So इसीलिए डिमांड एंड सप्लाई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द प्राइसेस चेंजेस, how the price of the good is going to change, what are the factors which are going to change the price of the good। अभी आपने देखा कि सब्सिडीज और टैक्सेशन का इम्पैक्ट प्राइस पे क्या पड़ता है, और रिस्पेक्टिवली उसका इम्पैक्ट डिमांड पे क्या पड़ेगा। सो डिफरेंट लेवल ऑफ like ways through which the demand and supply can be manipulated or controlled। So equilibrium price. What is equilibrium price? Equilibrium price is the price at which quantity demanded of the good is equal to quantity supply। Quantity demanded, अगर आप देखिए इसमें demand units है, so if the price is quoted 1 rupee, demand will be, quantity demanded will be 60 units और supply will be 5 units। Why so? जब price 1 rupee है तो demand 60 क्यों है और supply 5 क्यों है? Why supply is 5 and demand is 60? It's because demand is 60 here, reason being कि आपके लिए ये प्रोडक्ट बहुत चीप है, very like it is not expensive at all। So for a consumer, if the good is quoted at rupees 1, they'll demand surplus 60। And what about supplier? What will happen to supplier? Supply will decrease। So in the case, if the price is too low, quantity demanded will increase। And what will happen to quantity supplied? Quantity supplied will decrease। Why quantity supplied will decrease? Because आपकी तो cost of production ज्यादा है और आप मार्केट में सेल कर रहे हैं कितने पर, 2 rupees per 6 rupees, 1 rupee पे। So since you're selling at 1 rupee, then what is going to happen? It will be not profit making for you। आपके लिए profit making venture नहीं है। So आप क्या करोगे, आप supply कम कर दोगे। So when the price is too low, when the price is too low, quantity supplied will be less than quantity demand। Yes, that is why you see quantity demand is 60 units, quantity supply is 5 units। Demand is exceeding supply by how many units? 55 units। Surplus demand है ये। This is surplus demand of how many units? 55 units। अब since demand is more and supply is less, so what will you do as the producer? You will go for increasing the price। आपको पता चल गया कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, कंज्यूमर लेंगे। So what will you do? You will start increasing the price। So you will increase the price from rupees 1 to rupees 2। Okay, once you increase the price from rupees 1 to rupees 2, what will happen? जो डिमांड 60 थी अब वो कम होगी, कितनी होगी, 35 होगी। So the demand decreases from 60 to 35।
That means the price is increasing and the quantity demanded is decreasing. What happens to supply? Supply increases because now the price is increased from 1 to 2 rupees. और अगर आप सप्लायर हैं तो आपके लिए इंसेंटिव होगा कि हाँ प्राइस बढ़ रहा है तो लेट मी प्रोड्यूस द गुड सो द सप्लाई विल इंक्रीज फ्रॉम 45 to 35. Now the quantity demand is 35 and the price is also 35. This will be the break even or equilibrium price. Equilibrium price means at the price at which quantity demanded is equal to quantity supply. And this will be at rupees 2. That means 2 rupees per ये producer के लिए भी convenient है to sell 35 units of good और consumer के लिए भी easy to afford है. So that means the demand and supply will be equal and this will be the equilibrium price. So equilibrium price will be rupees 2 in this case. Okay, so in this case, the equilibrium price will be rupees 2 because the consumer is ready to buy the good at rupees. Yes, Pawan. At 1, there is shortage. There is a shortage of, we can say, supply and surplus of demand. Second case, it is equilibrium because the quantity demand is equal to quantity supply. So, आप क्या समझ रहे हैं इससे? नंबर 1 कि प्राइस जो है प्रोड्यूसर के लिए एक इंसेंटिव क्रिएट करता है. Price is always a factor which motivates a producer to produce more. Because higher the price makes you to gain more profit. That is how people believe in. So जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा आपको लगेगा इसका प्रॉफिट इसमें प्रॉफिट ज्यादा है so you will be going for producing that. So supply increases with increase in price of the good. Okay, what happens to demand? Demand, quantity demanded decreases with increase in the price of the good. जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाएंगे quantity demanded good की कम होती जाएगी because some consumers feel that ये इतना महंगा worth नहीं है. So they will not buy. Other set of people will think that tomorrow prices will for sure decrease. The prices कम होगी तब हम लेंगे. So basically at a higher price level, consumers will not buy, will buy less in number. That's why this demand, quantity demand of the good has decreased from 60 to 35 and supply has increased from 5 to 35. यहाँ पे 30 का gain हो गया supply में और यहाँ पे minus हो गया 25. So this is about decrease in the supply of the good. Increase in the supply of the good and decrease in the quantity demand of the good at rupees 2. I hope आप समझ रहे हैं कि इसका reason क्या है. अब now talking about at price 3. Suppose अगर producer को लगता है कि मुझे ये good 3 रुपए में बेचना चाहिए पर unit. So they decide to sell it at rupees 3 per unit. Now if they decide to sell at rupees 3 per unit, consumer के लिए ये और महंगा हो गया. If it becomes more expensive, so the demand, quantity demanded will decrease from 35 to 20. So further 15 units will be demanded less. 15 unit कम demand होगी market में. उसी तरह से what will happen to supply? Supply will increase by 10. Reason being, it motivates the producer to produce more because higher the price, higher the revenue they expect to gain through this. So in this case, the supply of the good will increase, but quantity demanded will decrease. So what is your understanding? जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड कम होती जाती है क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती जाती है एंड एज द प्राइस फॉर द गोज अप टू रुपीज 4 सो अगर प्राइस 4 रुपीज होगी तो उस केस में क्या होगा डिमांड फॉर द कम हो जाएगी कितनी कम 20 से 15 सो फॉर द डिमांड इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 20 to 15 दैट मीन्स 5 यूनिट्स कम हो गए डिमांड व्हाट अबाउट this year supply will increase because आपके लिए price एक incentive है so supply will increase supply increases to 10 rupees by 10 units sorry supply increases by 10 units so what is the equilibrium price in this case equilibrium price is rupees 2 and the quantity demanded is 35 quantity supplied is 35 so at equilibrium price quantity demanded is equal to quantity
supply. Okay, what will happen? Less than equilibrium price. That means equilibrium price is rupees 2 and quantity demanded is 35. Quantity supplied is 35. Okay, if we make it in a graphical form, ये आपकी demand है and this is your supply. In this case, here at the equilibrium price is how much? Rupees 2. Quantity demanded and supplied is how much? 35 units. So quantity demanded is, supplied is 35 units और price होगी इसकी 2 rupees. अब इस point पे it is at equilibrium. Reason being quantity demanded, quantity supplied दोनों की value same. At this point it is equilibrium because quantity demanded, quantity supplied is same. But if the price would have been 1 rupee, price would have been 1 rupee. अगर प्राइस गुड की 1 रुपी होती तो सप्लाई हो जाती 5 यूनिट्स और क्वांटिटी डिमांडेड हो जाती 60 यूनिट्स. नाउ इफ यू आर हियर, जब प्राइस कम है और ये सिनेरियो है, तो दैट मींस दिस इज सरप्लस, दिस इज excess demand 60 minus 5, that is 55 is excess demand, so this is excess demand. Okay, and if the price goes up to, if I erase this, so अभी हमने देखा कि अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो, so what will happen to the demand and supply or the price of the good? This is the equilibrium price, rupees 2, and this is quantity. So this is how much? 6. This is 2 rupees. It is 35 and 35. 35 units quantity or the good purchase and price is rupees 2. This is the equilibrium condition. अगर आप प्राइस 2 rupees से बढ़ा के 3 कर दे, if you increase the price from 2 to 3, what will happen in that case? If you increase the price from 2 to 3, supply बढ़ जाएगी. Supply will increase from 35 to 45. What happens to demand? Demand will decrease. Demand decreases from 35 to 20. Demand decrease over 20. If we make it again, this is the demand, this is the supply, this is the price, this is the quantity exchange. Quantity exchange means demand and supply. How much is the quantity demanded? How much is the quantity? This is quantity exchanged. And the value here is 35. And this is price. And price here is rupees 2. Okay, so this is the equilibrium price and equilibrium quantity. But just checking any doubts if you have. So, but if the price of the good quoted is below 2, we have shared. Below 2 में क्या होगा? अगर इसकी less than 2 है, equilibrium price से less than 2 है, demand आप देखिए, demand, draw the perpendicular here from demand. So the demand increases from 35 to 45. Quantity demanded बढ़ गई. What happens to supply? Supply decreases from 35 to, supply decreases. Quantity demanded at 1 is 60, sorry. At 1 is 60, quantity supplied will be 5. और ये जो गैप है यहाँ पे, ये क्या है? एक्सेस डिमांड. ये है एक्सेस डिमांड. कितनी है एक्सेस डिमांड? 55. ओके,
then you go to, if I make the graph again, so ये हो गया अगर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे कोट हो गई, लेस देन दैट, ओके। अगर सपोज इन दिस केस लेट्स मेक द ग्राफ अगेन, अगर हम ग्राफ फिर से बनाए, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये है प्राइस, और ये है क्वांटिटी एक्सचेंज। दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 35 और इसका प्राइस है ₹2, इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹2। अब सपोज प्राइस बढ़ गया, इफ द प्राइस गोज टू ₹3, price goes to ₹3, what happens to supply? Supply will increase. Supply कितनी हो गई? 35 से हो गई 45. So supply increases from 35 as the price increases from 2 to ₹3. Supply increases to 40. Supply बढ़ गई 45. Quantity supplied increases. Quantity supplied increases. What happens to quantity demanded? Quantity demanded decreases from 35 to 20. ये demand होगी 20. So this is the quantity demanded. Quantity demanded decreases to 20 and quantity supplied increases to 45. This here, this D dash and S dash. This is what, this is excess supply. This excess supply is here. How much is excess supply? 45 minus 20. This is excess supply. And this will keep on increasing here. You can see 55 minus 15. 65 minus 10. But if the price is ₹3, ₹4, ₹5, what is going to happen? Price बढ़ गया तो क्या होगा उस केस में? There are many people who cannot buy. बहुत सारे लोग होंगे जो इसको प्रोडक्ट को 35 ₹3 पे, ₹4 पे, ₹5 पे ले नहीं पाएंगे. So these consumers will be out of the market. Yes. So this is excess supply and excess demand or the equilibrium price. So equilibrium price कहाँ होगा? जहाँ की quantity demanded equal to quantity supplied होगा. So this is the equilibrium price and quantity. You can see here, ये आपकी डिमांड कर्व है और ये आपकी सप्लाई है. ये प्राइस इसका गुड का ₹2 कोट हो रहा है और ये क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे 35 और ये इक्विलिब्रियम प्राइस है. सो ₹2 is the equilibrium price at which quantity demanded is equal to quantity supplied, and this is 35 units. Okay, so this is the graph which shows about equilibrium price ₹2 and equilibrium quantity. Equilibrium quantity is 35. This is what is depicted through the graph. Okay, so this is clear to all of you. I hope so. समझ गए हो आप लोग कि इस ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस? ओके, सो शेख इज आस्किंग अबाउट कि जो सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, प्रोड्यूसर्स ने सरप्लस प्रोड्यूस कर दिया, उसका क्या होगा? अभी हम शेयर करेंगे कि उसका क्या होगा, अगर डेफिसिट होगा उसका क्या होगा, अगर सरप्लस हो गया तो उसका क्या होगा. ओके, सो अब नाउ यू सी इन दिस ग्राफ व्हाट वी हैड शेयर. अब इसमें वैल्यूज बदल गई है. अगर आप इसको ₹2 पे लेके चले, या लेट्स से कि मार्केट में अगर इसी ग्राफ को हम देखें, सो इक्विलिब्रियम प्राइस कितना हो गया इसका? इक्विलिब्रियम प्राइस is ₹10. Okay, and equilibrium quantity is 100 units. ठीक है. आप suppose the price increases to ₹15. प्राइस बढ़ गया
from rupees 10 to rupees 15. If the price increases from 10 to 15, what will happen? 10 to 15. What happens? अगर आप देखिए supply increases from 100 to 150. So supply will increase, quantity supply will increase from 100 to 150. Quantity supply will increase. And what will happen to quantity demanded since the price has gone up? Quantity demanded. This is the quantity demanded. So quantity demanded will decrease from 100 to 150 to 50. So in this case, quantity demanded will decrease from 100 to 50. So quantity demanded will decrease and quantity supply will increase with the increase in the price. And you know why it happens? It happens because the consumer gets less utility at a higher price than the lower price. So इस केस में अब ये surplus हो गया. Surplus कितना हो गया? 150 minus 50, that is 100 units का surplus हो गया. अब ये जो 100 units का surplus हुआ, supplier has already produced and the consumer and it is there in the market और consumer उसको ले नहीं रहा है. So if consumer is not going to take, अब producer करेगा क्या उसका? What the producer is going to do with that? Let me see once if you have it. So शेख का point कि अब इस केस में सब करेगा क्या producer? Because producer has produced surplus 100 units. Now what producer will do? Producer के पास दो ऑप्शन है, या वो उसको surplus को रख दे और जब मार्केट में डिमांड हो उसके बाद उसको रिलीज करे. Other option is that producer wants to sell off that. जो बना दिया surplus अब he or she wants to sell it off. उसको बेचना ही बेचना है. So वो क्या करेंगे? What is the option left with them? So producer will decrease the price. If the producer decreases the price from 15 to 12 or 13, what will happen if the price decreases from 15 to 12 or 13? So अगर producer के पास surplus है 100 units का at price 15 rupees, producer के पास surplus कितना है? 100 units का. अब इस 100 units का वो करेगा क्या? One option is that कि इसको होल्ड करके रख लो और जब मार्केट में डिमांड बढ़ेगी then you can go for selling it. One option is that you keep it on hold and keep it in the warehouse, and once the demand increases then you go for selling it out. Suppose this fellow doesn't have inventory place, उसके पास कुछ है नहीं जहां पे वो स्टोर कर सके. उसके पास क्या ऑप्शन है? इस प्रोडक्ट के प्राइस को कम करो, to decrease the price. So let's decrease the price from 15 to 14. अब जैसे ही प्राइस 15 से 14 आया यहाँ पे, what will happen? सप्लाई इसकी कम हो जाएगी, 150 से कम हो जाएगी और डिमांड इसकी बढ़ जाएगी. So demand will increase to 60 and supply will decrease to 140. अब इसी तरह से as long as the producer keeps on decreasing the price, जैसे जैसे प्रोड्यूसर प्राइस को कम करता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई रिस्पेक्टिवली कम हो जाएगी. एंड दिस विल कंटिन्यू हाउ लॉन्ग? जब तक कि प्राइस वापस 10 पे ना हो जाए. Once the price is at 10 rupees, quantity demanded will be equal to quantity supply. This is surplus, impact of surplus. तो surplus के केस में क्या होगा? प्रोड्यूसर प्राइस को कम करेगा. Once the producer decreases the price, quantity demanded will increase. What happens to quantity supply? Quantity supply will decrease. This will keep on increasing, this will keep on decreasing, and finally the price will be again at these 10. Okay, so this is stable equilibrium price. So चाहे प्राइस बढ़े या कम हो, but after some time it will be at a break-even only. हमेशा वो quantity demanded will be equal to quantity supplied after a period of time. हो सकता है कि कुछ समय ज्यादा लग जाए, but definitely that will be equilibrium price will be achieved. Okay, so this one. अब shortage में क्या देखा आपने? Shortage में इसमें equilibrium price कितना है? ₹10. Equilibrium quantity is 100 units. अब आपने प्राइस कम कर दिया ₹10 से ₹5. Once you decrease the price from ₹10 to ₹5, what happens? You see here, demand कितनी हो गई? Demand is now 150.
So the quantity demanded increases from 100 to 150. Quantity demanded बढ़ गई. What happens to quantity supply? Quantity supply decreases. Quantity supply decreases from 100 to 50. So quantity supply decreases from 100 to 50. Now this will reduce quantity supply and increase quantity demanded. और इसकी वजह से क्या होगा? Gradually prices बढ़ने लग जाएंगी और prices will come back to 10 rupees. The quantity exchange will be 100 units and the equilibrium will be stopped. So इससे आप क्या समझे? इससे आप एक चीज समझे, आई होप सो, कि चाहे प्राइसेस बढ़े या कम हो, अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्या होगा? मार्केट में सरप्लस प्रोडक्शन होगा, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको प्रोड्यूस को नहीं ले पाए. सो गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट का रोल क्या होगा? गवर्नमेंट, अगर सपोज फार्मर है, अगर आपने सरप्लस प्रोड्यूस कर दिया, प्रणव, आप एक फार्मर है, आपने सरप्लस प्रोड्यूस कर दिया, सो व्हाट गवर्नमेंट विल डू? गवर्नमेंट विल से ओके फाइन, यू आर प्रोड्यूसिंग सरप्लस, आपके पास सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, हम इस सरप्लस को ले लेते हैं और इस सरप्लस को हम, इसके पैसे हम आपको दे देंगे. सो गवर्नमेंट गोज फॉर बाइंग दैट सरप्लस और उसके लिए फार्मर्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट दे देते हैं, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है. सो गवर्नमेंट गोज फॉर ऑफरिंग. ओके. अगर शॉर्टेज होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जो उसके पास स्टॉक है गवर्नमेंट के पास, वो रिलीज कर देगी मार्केट. रिलीज करने से क्या होगा? प्राइसेस अपने आप कम हो जाएगी. ओके. सो दिस इज, तो चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई. सो आज हम जो बात कर रहे हैं, we are going to talk about changes in demand and supply factors. कि अगर डिमांड शिफ्ट होती है राइट में, या डिमांड लेफ्ट में शिफ्ट होती है, या सप्लाई इंक्रीज होती है राइट में, या सप्लाई डिक्रीज होती है लेफ्ट में, तो इसका इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या पड़ता है. ओके. सो इफ यू सी इन दिस ग्राफ, अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज इन डिमांड, तो इन डिमांड बढ़ने से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ता है. सो सपोज लेट्स से कि festivals are approaching and people make sweets, and sweets they make of, खाना किसमें, स्वीट्स किसमें बनाते हैं? मिल्क से. रसगुल्ला है आपका, बाकी प्रोडक्ट्स हैं, बर्फी है, सब कुछ है, मिल्क से बनता है. सो मिल्क, सो व्हाट विल हैपन? द डिमांड फॉर मिल्क विल इंक्रीज. यस, फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो डिमांड मिल्क की बढ़ गई, तो डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड विल इंक्रीज. दैट मीन्स हर प्राइस लेवल पे डिमांड बढ़ गई. यस, तो डिमांड विल शिफ्ट टू राइट एंड डिमांड, सो डिमांड बेसिकली इंक्रीज हो गई ओवरऑल. मिल्क की डिमांड बढ़ गई है बिकॉज फेस्टिव सीजन आ रहा है और लोगों को मिठाइयां बनानी है, सो दे वांट टू हैव मोर ऑफ मिल्क टू प्रोड्यूस दैट, एंड दैट इज व्हाई ओवरऑल डिमांड ऑफ मिल्क विल इंक्रीज इट ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन. सो अब डिमांड बढ़ने से मिल्क की क्या हो गया? इनिशियली आप इक्विलिब्रियम थे इस प्राइस पे, लेट्स से यहाँ पे प्राइस है 50 रुपीज, क्वांटिटी एक्सचेंज है 50 यूनिट्स. अब क्या हुआ? प्राइस बढ़ गई बिकॉज डिमांड जो है राइट में शिफ्ट हो गई. राइट में शिफ्ट होगी तो सप्लाई उसके अकॉर्डिंगली बढ़ेगी नहीं, सप्लाई तो सेम है, supply is same, but quantity demand, but the overall demand has increased. So demand has increased from Q to Q2. Yes. So the demand has increased from Q to Q1. So once the demand increases from Q to Q1, what happens? Prices will increase. The price increases from P to P1. तो यहाँ पे प्राइस चला गया 60 रुपीज. Price has increased. So once the price increases, what will happen to the demand? Demand in that case, because the demand has increased and the prices have increased, what will happen to the quantity exchange? Quantity exchange, you can see here, was initially at point Q, 50 units. अब quantity exchange कितनी होगी? Q1. तो quantity exchange बढ़ जाएगी, कितने से बढ़ेगी? Maybe 60. So the quantity exchange increases. So what? Equilibrium quantity will increase and the equilibrium price will also increase with increase in demand. अगर demand shift हो जाती है rightwards, if the demand increases and shifts towards right, so अगर demand shift हो गई right में, तो उस केस में क्या होगा?
price will increase. Price increases from P to P dash. The price will increase from P to P dash, or quantity exchanged will increase from Q to Q1. Yes, quantity exchange. So increase in demand में prices भी बढ़ेगी और quantity exchange भी बढ़ेगी. Okay, so this is the case when the overall in the economy price will increase and the quantity exchange will increase demand के बढ़ने से. अब decrease in demand में क्या होगा? Opposite होगा. Decrease in demand means the demand decreases from D to D dash. अब demand कम हो गई, D से D dash हो गई. Okay, so once the demand decreases, तो demand decreases, initial price क्या है इस केस में? OP. Initial price is OP. This is the price and this is the quantity exchange. So initial price और initial quantity क्या है? Initial price is OP. And what is initial quantity exchange? Initial quantity exchange is OQ. ठीक है. अब क्या हुआ? Demand decreases from DD to DD dash. Since the demand has decreased, what happens? The equilibrium shifts from E to E dash. Equilibrium shift हो गया E से E dash because demand decrease हो गई, supply same है. So the new equilibrium is E dash. Quantity exchange will decrease from OQ to OQ1. So quantity will decrease from OQ to OQ1. And what will happen to the price? Price will decrease from OP to OP dash. OP1. So price will decrease and quantity exchange will decrease. Sorry. This is the impact of decrease in demand. अगर demand कम होगी तो ये impact होगा equilibrium price और quantity exchange में. Okay, so no queries. This is decrease. So अभी तक हमने शेयर किया increase in demand का impact price और quantity exchange पे क्या होगा, और decrease in, आप simple graph बना के देख सकते हो. You can simply make the graph and see yourself. So if they ask you a simple question, what would be the impact of decrease in demand or increase in demand? So आप simply बनाइए. You make initial demand and supply और एक equilibrium price और equilibrium quantity बनाइए. Now suppose they say that demand is increasing. So demand will increase from D to D dash. Demand increases means equilibrium will shift from E to E dash. Price will increase and the quantity exchange will also increase. In the case of increase in demand. Decrease in demand में आपने देखा क्या हुआ? Decrease in demand, price decreases and quantity exchange also decreases. So this is the impact of increase and decrease in price, demand, and its impact on equilibrium price and equilibrium quantity. आप suppose demand same रहती है और supply बढ़ जाती है. If supply increases, so what's going to happen if the supply of the product increases from S to S dash? अगर supply बढ़ गई, if the supply increases from S to S dash, so increase and decrease आप समझते हैं ना? Increase and decrease में क्या होगा? पूरी curve shift होगी. अगर हम कहते हैं demand is increasing, demand has increased means demand curve will shift towards right. अगर हम कहें demand has decreased, then demand curve will shift towards left. इसमें देखा ना आपने? अगर हम कहें demand has decreased, so it shift towards left. पूरी demand curve. अगर हम कहें demand is increased, that means the entire demand curve will shift towards right. Okay. So increase in supply का impact क्या होगा? Increase in supply. Suppose supply बढ़ गई और demand same है, तो prices पे क्या होगा impact? Prices उस केस में कम होगी ना, because supply आपके पास ज्यादा हो गई है मार्केट में, प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा हो गई है, डिमांड कम है, डिमांड सेम है, so overall supply will increase, and since supply increases, prices will decrease from P to P dash.
and the quantity exchange. What will happen to the quantity exchange? Quantity exchange will increase from OQ to OQ2. Okay, so the quantity exchange will increase and quantity exchange will increase and the price will decrease. So increase in supply की वजह से equilibrium price कम होगा और equilibrium quantity बढ़ जाएगा because of increase in supply. So जब भी राइटवर्ड शिफ्ट होगा सप्लाई में तो सप्लाई बढ़ रही है और अगर डिमांड नहीं बढ़ रही है तो उस केस में क्या होगा? प्राइस गुड का डेफिनेटली कम होगा और रिस्पेक्टिवली सप्लाई बढ़ जाएगी. ओके, सो क्वांटिटी एक्सचेंज विल इंक्रीज. एब्सोल्युटली. ये सारे जो फैक्टर्स प्रणव ने बहुत अच्छी बात है यहाँ पे हाईलाइट करी है कि दीज चेंजेस जो आप पूरी सप्लाई या डिमांड कर्व को आप शिफ्ट करते हो ये होता है बाकी रीजंस की वजह से बट नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस. सप्लाई किसी चीज की प्रोडक्ट की बढ़ गई, मे बी टेक्नोलॉजी आपने एडवांस यूज कर ली, आपकी कॉस्ट कम होगी तो आपने सप्लाई बढ़ा दी. जैसे अभी हमने बात की फेस्टिव सीजन्स है, फेस्टिव सीजन्स में क्या होता है कि आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है मिठाइयों का तो डेफिनेटली यू वांट मोर ऑफ दिस मिल्क एंड बेसन एंड अदर थिंग्स. सो डेफिनेटली इनका प्राइस मार्केट में बढ़ जाएगा. ओके, सो दिस इज व्हाट. तो सप्लाई और डिमांड का जब शिफ्ट होती है पूरी की पूरी तो ये प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से होती है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ. ओके, नाउ डिक्रीज इन सप्लाई. सपोज अगर सप्लाई कम हो गई, ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, मॉनसून समय पे नहीं हुआ सो उसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो गया और पूरी सप्लाई वेजिटेबल्स की कम हो गई. सो सप्लाई डिक्रीजेस. नाउ जब सप्लाई कम हो गई है अक्रॉस ईच लेवल ऑफ प्राइस तो क्या होगा उस केस में? प्राइस बढ़ जाएंगी मार्केट. तो प्राइसेस विल इंक्रीज फ्रॉम ओपी टू ओपी डैश और क्वांटिटी एक्सचेंज क्या हो जाएगी? क्वांटिटी एक्सचेंज ओक्यू से कम होके ओक्यू टू हो जाएगी. सो जब डिक्रीज इन सप्लाई होता है मार्केट में और डिमांड सेम होती है तो प्राइस equilibrium price will increase and equilibrium quantity exchange will decrease. In the case of decrease in supply, अगर supply decrease होगी. Okay, so this is the impact on equilibrium price and quantity exchange in the case of increase or decrease in supply. अब अभी तक हम बात कर रहे थे कि एक फैक्टर बढ़ रहा है, मे बी डिमांड एक्सक्लूसिवली इज इंक्रीजिंग, सप्लाई इज नॉट इंक्रीजिंग, या फिर सप्लाई बढ़ रही है तो डिमांड नहीं बढ़ रही है, या फिर सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो डिमांड सेम है, और और डिफरेंट वेरिएशंस. यस, तो उस केस में केवल हम एक फैक्टर को चेंज कर देते, या हम डिमांड को चेंज कर देते या हम सप्लाई को चेंज करते और फिर हम उसका इम्पैक्ट प्राइस क्वांटिटी एक्सचेंज पे एनालाइज कर देते. नाउ व्हाट आर वी डूइंग? नाउ वी आर टेकिंग केयर अबाउट बोथ डिमांड एज वेल एज सप्लाई. हम दोनों फैक्टर्स को आप कंसिडर कर रहे हैं कि अगर डिमांड बढ़ गई और सप्लाई भी बढ़ गई तो if you see in this A case, what's happening in the A case? What demand is increasing, डिमांड जो डी डी था वो डी डैश हो गया तो डिमांड ऑल थ्रू आउट बढ़ गया एंड सप्लाई which was SS has increased to S dash S dash. Supply will also increase. Supply has increased and the demand has also increased. अब डिपेंड करता है कि डिमांड कितनी बड़ी और सप्लाई कितनी बड़ी. इस केस में आप देखोगे डिमांड इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई आर इक्वल. बोथ आर इक्वल. जितनी डिमांड बढ़ी है उतनी ही सप्लाई बढ़ गई है. सो सिंस बोथ हैव इंक्रीज्ड इन द सेम प्रपोर्शन, दोनों में जो इंक्रीज हुआ है सेम प्रपोर्शन में हुआ है तो उस केस में प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा बट डेफिनेटली क्वांटिटी एक्सचेंज बढ़ जाएगी. सो व्हाट इज योर टेक अवे इन दिस केस? अगर डिमांड और सप्लाई सेम प्रपोर्शन में बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली प्राइस उसका प्रोडक्ट का सेम रहेगा. आप देख लो इसमें ओपी ही है प्राइस. Price is not changing, but the quantity exchange increases from OQ to OQ dash. So quantity exchange बढ़ जाएगा OQ से OQ dash पर जबकि प्राइस इसका प्रोडक्ट का सेम रहेगा. किस केस में? जब आपका डिमांड और सप्लाई सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होगा, दोनों सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज होगा, तब क्या होगा? क्वांटिटी एक्सचेंज विल इंक्रीज
and the equilibrium price will remain same. अब सेकंड केस आप लो, सेकंड केस बी पैनल में, अगर आप बी पैनल, यू सी डिमांड इज इंक्रीजिंग और सप्लाई भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ ही रहे हैं, बट इस केस में क्या हो रहा है कि डिमांड increase in demand is much more than increase in supply. Yes, you can see that demand D से D dash में significant increase है demand, but supply में बिल्कुल minor increase है. Yes, supply increases marginally and the demand increases to a great extent. What is going to happen because of that? सप्लाई बढ़ नहीं रही है उस रेशियो में, प्रपोर्शन में, जिस प्रपोर्शन में डिमांड बढ़ रही है, तो डेफिनेटली कुछ शॉर्टेज होगी एंड दिस शॉर्टेज रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द गुड. So the price of the good will be higher. What will happen to equilibrium quantity? Equilibrium quantity exchange will be more. Reason being, as the prices increases, consumers become more hesitant for the future and they want to safeguard today, so the quantity exchange will increase from OQ to OQ dash. So इस केस में जब supply increase हो गई, demand भी increase हो गई, but increase in demand is more than supply. So इस केस में क्या होगा? Price थोड़ा सा moderately increase होगी, quantity exchange बहुत सारी increase. Okay, so price will increase moderately, थोड़ी सी change होगी price, but quantity exchange will change significantly in this case. So this is clear. So it's not only about, see, जब हम बात कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई चेंज की, तो आपको केवल ये नहीं देखना है कि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है. सो आपको सब कुछ देखना है, आपको केवल ये नहीं देखना डिमांड और सप्लाई कम, आपको ये भी देखना है टू व्हाट एक्सटेंट द डिमांड इज इंक्रीजिंग एंड टू व्हाट एक्सटेंट सप्लाई इज इंक्रीजिंग. अगर डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं तो डिमांड कितना बड़ी है और सप्लाई कितना बड़ा है. अगर दोनों सेम नहीं है तो डेफिनेटली इट्स इम्पैक्ट विल बी ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी एक्सचेंज. अगर दोनों सेम है तो फिर प्राइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्वांटिटी एक्सचेंज डेफिनेटली विल गेट impacted to this. Then the next is this one, C. Look at this one. So what's your learning with respect to this one? In this case, you see demand बढ़ रही है, but increase in demand is less and increase in supply is more. So इस case में increase in demand is less than increase in supply. इस case में increase in demand is greater than increase in supply. इस case में increase in demand is equal to increase in supply. So this one case, the second case, and this third case. What do you see in the case of increase in demand is less than increase in supply? Increase in demand is less than increase in supply. So prices basically इस case में कम होंगे. Prices will decrease and quantity exchange will increase from OQ to OQ dash. The quantity exchange will increase and prices in this case will decrease from P to P dash. So if we take about simultaneously decrease in demand and supply and its impact on equilibrium price, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो डिमांड एंड सप्लाई दोनों चेंज होते हैं, उसका इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या इम्पैक्ट है, तो आपका आंसर क्या होगा? कैन यू गिव स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कि सप्लाई और डिमांड दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो इसीलिए प्राइस उसका कम होगा और रिस्पेक्टिवली क्वांटिटी एक्सचेंज उसकी बढ़ेगी. बट इन रियल वर्ल्ड दोनों सेम प्रपोर्शन में कभी चेंज नहीं होंगे, एक ज्यादा बढ़ेगा एक कम बढ़ेगा, एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हो सकता है कि फॉर्म इंडिविजुअल के लिए अप्लाई नहीं, उस केस में ये वाला केस सिनेरियो, दिस simultaneous increase and decrease in the price and supply and on its equilibrium price. And in this case also you can see that equilibrium price is decreasing and the quantity exchange is more. So what can you do for this kind of outcome to study? First and foremost, you have to study that demand and supply जो है उसके इंट्रैक्शन के बिना कोई भी प्राइस खुद का डिटरमिन नहीं हो सकता. वी हैव शेयर कि किसी भी चीज का प्राइस डिपेंड किस पे करता है? डिमांड और सप्लाई के टर्म्स. और डिमांड और सप्लाई डिपेंड्स ऑन व्हाट? The benefit which a firm enjoys with respect to the cost of delivery.
Yes. So when both demand and supply increase, the equivalent quantity increases, but the change in equivalent price is uncertain. The equivalent quantity decreases, and the change in equivalent price is uncertain. So both the scenarios have been given कि अगर दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे तो अगर एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा तो आपने देखा है वेरिएशन. In this case, you can see when the demand and supply curve both are shifted, are increasing or decreasing respectively, and its impact on equivalent price and quantity. So first graph में अगर आप देखिए कि demand is increasing, demand has increased from DD to DD dash. Demand बढ़ गई है DD से DD dash में और supply जो SS है वो increase हो गई है S dash. So supply is increasing and the demand is increasing. So what will be the impact of this? Prices gradually, ये price यहाँ आएगा. This graph is wrong. It will be here. And the quantity exchange will be this. Not this one. Okay, so this is the supply. The supply and demand curve. And this is the point of view. So what is the impact of increase in demand and decrease in supply, or rather increase in demand to great extent and increase in supply by only minor amount? So if increase in supply is only negligible and the increase in demand is huge, then prices will for sure increase and the quantity exchange will increase in that case. So, okay. So this is clear to all of you, I hope so. Second case में आप देखो demand बढ़ रही है, इसमें भी supply increase हो रही है. But in this case, increase in demand is less than increase in supply. अब जो demand बढ़ रही है वो कम बढ़ रही है और supply ज़्यादा बढ़ रही है. So if supply increases more than demand, what is going to happen? If supply increases more than demand, what is going to happen? Then also the prices will increase. But here, the quantity exchange will decrease. Quantity exchange in this case will decrease rather than increasing. अभी आपने last case में क्या share किया? Last में जब demand बढ़ गई और quantity supplied भी बढ़ गई, but increase in demand is less than quantity supplied और इसीलिए इस case में quantity exchange बढ़ गया. But in the second case, since the demand is increasing and the supply is decreasing, इसमें supply क्या हो रही है? कम हो रही है. And since supply both case supply is moving from S to S dash. And since supply is decreasing, what is going to happen? The prices are going to increase and the quantity exchange will decrease. So price और quantity exchange का relationship केवल demand और supply पे depend नहीं करेगा. It will also be dependent on कि दोनों में change कितना हो रहा है. Okay, so how both are changing and to what extent both are changing. दोनों अगर change हो रहे हैं, किस हद तक दोनों change हो रहे हैं? दोनों same proportion में change हो रहे हैं, दोनों same direction में change हो रहे हैं, or they are moving in the opposite direction. And secondly, are they moving in the opposite direction in the same proportion? अगर दोनों same नहीं है तो उस केस में आप देख रहे हैं कि प्राइस एक केस में बढ़ रहा है, दूसरे में भी प्राइस बढ़ रहा है, बट सेकेंड कॉम्पोनेंट क्वांटिटी एक्सचेंज ए केस में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी एक्सचेंज बी में क्या होगी? डिक्रीज होगी. So this is the difference in the case of difference in the value of or the quantum of demand and supply. Okay, so this is about opposite direction में जब जाएंगे तो आप डायरेक्टली कंक्लूड नहीं कर सकते जब तक कि आप फिगर नहीं बनाएंगे और उसको एनालाइज नहीं करेंगे. So supply and demand का what we have learned is about कि ये दो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं सप्लाई और डिमांड के कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, बट एक केस में डिमांड इज इंक्रीजिंग मोर एंड अदर केस that supply demand is increasing more with respect to supply, and second case demand is increasing more but supply is not increasing in the same proportion or is increasing less. So when demand increases and supply decreases,
The equilibrium price rises, but nothing certain can be said about the change in the इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि इसी रेशियो में चेंज होगा, बढ़ेगा या इतना कम होगा. यू हैव टू सी दैट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द वैल्यू. सो यू कैन सी हियर इस केस में, आप देख रहे हो कि डिमांड बढ़ गया, डिमांड हैज इंक्रीज अ लॉट. यू सी, ये जो गैप है, दिस इज वास्ट एज कंपेयर टू दिस वन. इसमें डिमांड थोड़ा सा बढ़ रहा है, but इसमें demand is increasing a lot. So demand increase is more and supply जो कम हो रहा है इसमें कम है. So the demand increase in demand is more than decrease in supply. इस केस में क्या होगा? Prices will increase and quantity exchange will also increase. So quantity exchange will also increase. Okay. The quantity exchange will also increase. And in the second case, if you look in the second case, the demand has increased and the supply has decreased, but इसमें supply ज़्यादा कम हो रही है. Since supply is decreasing more, इसीलिए इसमें price तो बढ़ रहा है, but quantity exchange is decreasing. Because supply ज़्यादा कम हो रही है, supply will impact the quantity exchange, prices का impact पड़ेगा, so quantity exchange will decrease. Demand भी supply is decreasing, but demand का quantity exchange बढ़ेगा because आपकी demand जो है, you will try to fulfill at a little bit higher price. So, अब एक ये, let's take break, and after break we will be discussing this uh, problem which is given in your book. And apart from that, we can share other examples also so that you understand the core of this shift in the demand and supply. Okay. So best way है कि आप graphs बनाइए. Once you make graphs, then it will be easy for you to understand. Okay. So let's take break for 10 minutes and then we start again at 3:20.
So what we have discussed till now, हमने अभी तक जो डिस्कस किया, that is about demand and supply, different combinations. In one case, the demand was increasing, supply was same. Second case, the demand was decreasing, supply was same. In third case, demand was increasing, supply was increasing, and the demand was same. And one case, the supply was increasing and the demand was same. So respectively, we had shared different, and then we had shared जब दोनों बढ़ जाते हैं या दोनों कम हो जाते हैं, and next probability what we had shared, उसके अलावा हमने शेयर किया कि डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ भी रहे हैं, हो सकता है उस केस में द डिमांड इज इंक्रीजिंग मोर एंड सप्लाई इज इंक्रीजिंग लेस, या सप्लाई ज्यादा इंक्रीज हो रही है और डिमांड कम इंक्रीज हो रही है, और डिमांड इज डिक्रीजिंग मोर देन सप्लाई इज डिक्रीजिंग एंड रिस्पेक्टिव. सो दिस क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू में दे विल, दिस इज वन एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन योर बुक. ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो कि आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, और जिसके बेसिस पे आपको अपना आंसर शॉर्टलिस्ट करना हो. So you can have these n number of permutation combinations in your paper, and in that case, if the concept clarity is there, then you will be able to shortlist which is the correct answer out of the ones which are given to you. Okay, so for that it is important to see best way to learn is that you make graphs yourself. अपने आप graphs बनाइए और उसको establish कीजिए that उसका impact क्या पड़ेगा. Okay, so this is how you can do. अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया है, इस क्वेश्चन में आप देखो प्राइस एंड डिमांड चेंज का ग्राफ दिया है. ओके, ये डिफरेंट डिमांड कर्व्स दी, दीज आर डिफरेंट डिमांड कर्व्स D1, D2 एंड D3. अगर ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट हो गया D1, ओके, तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट. अब इससे अगर D2 पे जाएंगे, इफ यू मूव फ्रॉम D1 टू D2, दैट मींस डिमांड इज इंक्रीजिंग. अगर आप D1 से D3 जाएंगे, दैट मींस डिमांड इज डिक्रीजिंग. ओके, अब यहाँ पे आपको ये दिया है D1 एंड S1. So they have given इस केस में if we make this graph again, so इस केस में this is the D1 और ये S1, ये आपका इनिशियल ग्राफ है. ओके, इस इनिशियल ग्राफ में आपकी प्राइस जो है, this will be the price and this will be the quantity exchange, P and Q. Okay, so P0 rather P0 and Q0. अब D2 जो है, D2 is this one. मतलब what it means is demand is increasing. Yes, when you move from D1 to D2, demand is increasing. And when you move from D1 to D3, demand is decreasing. When you move from D1 to D3, demand is decreasing. Yes? So, उसके accordingly आप individually graph बना के आप अपना answer इससे match कर सकते. Okay? So, how to attempt this question so that you do not do mistake while answering. So, अब questions क्या है इसमें based on the graph? First question is, assume X is a normal good. Normal good क्या होते हैं? What do you mean by normal good? हमने demand में पढ़ा था. Normal good are goods. Normal goods क्या होते हैं? Normal goods are goods. ये ऐसे goods होते हैं जब आपकी इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड बढ़ती है, और अगर इनकम कम होती है then the demand decreases. Normal goods are goods. When the income increases, demand increases. When income decreases, demand decreases. Example of normal goods can be your whatever you like, your clothes, your footwears, आपके shoes, कपड़े, roaming around, like having food in the restaurant, whatever it is. So as आपकी income बढ़ती है, आप ज्यादा जाते हैं,
सो दैट मीन्स इनकम इंक्रीजेस एंड द डिमांड इंक्रीजेस। और जब आपकी इनकम कम हो जाती है तो आप रिस्पेक्टिवली अपना कंजम्पशन कम कर देते हैं, सो द डिमांड डिक्रीजेस। सो दिस इज नॉर्मल गुड। सो इन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक्स इज अ नॉर्मल गुड। अब बाकी चीजें कांस्टेंट रहेंगी तो होल्डिंग एवरीथिंग एल्स एज कांस्टेंट, अगर इनकम बढ़ी, assume that income increases, the price of factor of production also increases. Okay, so income is increasing and price of the factor production is also increasing. What point is the figure above is most likely to be the new equilibrium price? बहुत कॉम्प्लेक्स है ये क्वेश्चन, इसीलिए आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अब उन्होंने क्या कहा कि ये डिमांड है आपकी, ये आपकी सप्लाई है और ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये क्वांटिटी एक्सचेंज। अब नॉर्मल गुड है, इट इज अ नॉर्मल गुड। नॉर्मल गुड मीन्स इनकम, और इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड है तो डिमांड बढ़ेगी। So demand will increase from D to D dash. Okay. And what happens to the price? Price will increase. So if you look at this graph here, is in this graph, if you see what's happening, the demand is increasing from D1 to demand is increasing from D1 to D2. So what will happen to the, and supply is increasing or not increasing? Supply in this case, supply, they're not talking about supply. They're only talking about income, demand, because normal good किसका component है? Demand का, supply का factor तो नहीं है. But the, and the price of factor of production also increases. The price of factor of production means cost बढ़ गई है. Price of factor of production increases means supply will decrease. So supply will decrease. Yes. So आपको देखना है कि demand के क्या factors हैं. You have to find out what are the factors of demand, determinants, एंड सप्लाई डिटर्मिनेंट्स। आपको देखना होगा कि ये क्या सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हैं या डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है? ये प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स हैं, एक्सेप्ट प्राइस, प्राइस ऑफ द गुड। सो गोइंग बैक टू बेसिक्स व्हाट वी हैड डिस्कस अबाउट, आपको पता है डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, taste and preference, and price of related goods. Yes, related goods can be complementary goods and substitute goods. Now, when we talk about shift in the demand, हमने movement along a shift की बात की है. In this case, you can see the entire demand curve is shifting. तो shift in the demand curve में ये वाला factor जो है price वाला, ये नहीं रहेगा. This you will not consider. उसके अलावा कोई भी एक factor में change होगा. One of the factors will change. Okay, maybe income of the consumer will change. बाकी factors सब constant रहेंगे, केवल income increase होगी या taste and preference change हो गया या फिर प्राइस जो है रिलेटेड गुड का चेंज हो गया। अब इस केस में आपको क्लियर कट उन्होंने दिया है इस केस में कि इनकम, इनकम इन दिस केस इज इंक्रीजिंग और गुड कैसा है? नॉर्मल गुड है। सो दैट मीन्स डिमांड इसकी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये नॉर्मल गुड है और इनकम इंक्रीज हो रही है। वन। दूसरा उन्होंने कहा कि द प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इंक्रीजेस। अब सप्लाई का क्या? सप्लाई फंक्शन ऑल्सो। सप्लाई का फंक्शन क्या होता है? सो डिमांड का फंक्शन है क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द गुड। अगर ये एक्स गुड है तो एक्स का प्राइस, देन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। यस। और सप्लाई में क्या होता है? क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ द गुड, then price of factors of input. Okay, factors of input जो भी आपके हैं, then technology, then taxes or subsidies. All these factors will, price of raw material,
price of technology, price of land, labor, and everything. Okay, this is the price of the good. This is quantity of supplied of X and price of X. अब इसके अलावा कोई भी फैक्टर अगर चेंज होगा, एक कोई भी फैक्टर चेंज होगा, बाकी कांस्टेंट रहेंगे, तो इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. उसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी और डिक्रीज इन क्वांटिटी. दैट मीन्स ये पूरी की पूरी सप्लाई कर्व लेफ्ट और राइट में शिफ्ट होगी. दैट यू नो. यस, यू नो दिस. सो इन दिस केस, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, तब आपके लिए कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं. सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इसमें नॉर्मल गुड है, एक्स नॉर्मल गुड है. नॉर्मल गुड है मतलब इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड बढ़ेगी. इफ इनकम इंक्रीज डिमांड इंक्रीज. दैट मीन्स दिस इज द इनिशियल डिमांड, this is the initial supply. Now income will increase from D1 to D2. Okay, and what will happen to the supply? Price of factor production. अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, अगर टेक्नोलॉजी की कॉस्ट बढ़ गई, अगर लैंड की प्राइस बढ़ गई, if the price of factors of production increases, then supply will decrease. Supply decreases. Supply decreases means this is the initial price, this is the initial quantity. What will happen? Price will increase and quantity exchange will increase little bit only. So if you look in this graph, which point will it be? This case, the demand is increasing from D1 to D2, supply is decreasing from this S1 to S3. So supply decreases from S1 to S3 and the demand decreases from D2. So point 2. This is the point of equilibrium. Yes? So initial point of equilibrium क्या था? 1. अब demand बढ़ गई from D to D2 because of the normal good, and supply decreases from S1 to S3. So the new equilibrium will be 2. So the point will be 2. So equilibrium point will be 2 in the case of first one. Okay, so here, what's the point? So it is point 2. Yes? So concept clarity is very, very important to understand this. अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, अगर आप ग्राफ्स नहीं बना पाएंगे, तो उस केस में आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे. Okay, then the next one. Next is, we are analyzing the market for good Z and the price of complement good Y. आप किसकी बात कर रहे हैं? आप good Z की बात कर रहे हैं. We are talking about good Z and we are talking about price of good Y. And they are saying in the question कि ये Z and Y complementary goods. Now, once we say these two are complementary goods, that means what? What is the relationship between two goods? Suppose if I write that quantity demanded of good Z is a function of price of good Z, price of good Y, taste and preference, and so on. Okay, so this is about the demand. So this is the price of good. This is the quantity demanded of Z. This is the price of Y. अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जैसे milk and ice cream. Complementary good. If the price of milk increases, what will happen to the quantity demanded of ice cream? Ice cream quantity demand will decrease. Yes, complementary good. So in the case of complementary good, what is the relationship between the two goods? Two goods are inversely related. आप इससे क्या समझेंगे? दोनों goods inversely related है. अगर complementary good है, तो अगर एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरी की क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, because these two are complementary goods. Yes, if the price of steel increases, what happens to the demand of car? कार की डिमांड कम होगी क्योंकि स्टील का प्राइस बढ़ गया. So that is why so पहले आपको रिलेशनशिप जैसे नॉर्मल गुड्स में आपको समझना पड़ेगा कि नॉर्मल गुड इनकम की वजह से डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ता है. So सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर इनकम बढ़ रही है और वो नॉर्मल गुड है तो डेफिनेटली वो बढ़ेगा. यस,
दूसरे केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड में, अब इस केस में क्या होगा कि अगर आप जेड की डिमांड कंसिडर कर रहे हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री गुड बाय, सो व्हाट विल हैपन टू द डिमांड? डिमांड डिक्रीज होगी ना, डिमांड विल डिक्रीज. सो इन दिस केस डिमांड विल डिक्रीज, नंबर वन. दैट इज सॉर्टेड. आपको पता चल गया कि डिमांड इसमें डिक्रीज होगी, तो डिमांड विल डिक्रीज. सो अगर आप ग्राफ इसका बनाएंगे, तो इफ यू मेक ग्राफ फॉर दिस, what would be the graph for this? This is the demand, this is the supply. Okay, so since it is a complementary good, so the demand for the good will decrease. So the demand decreases from D1 to D3. Demand decreases. What happens to supply? At the same time, there's technological advancement in the production. Technological advancement की वजह से क्या होगा? So supply. Supply is the function of price of the good, technological advancement, and price of raw material. अब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज, सप्लाई विल इंक्रीज. तो सप्लाई बेसिकली विल इंक्रीज since there is technological upgradation. So technology upgradation, supply will increase. Supply increases. Now go back to this table here, graph here. What is it showing? In this case, complementary good है तो demand कम होगी. So demand हो गई D1 से D3. Supply will increase. So supply increases from S1 to S2. So supply increases. So point will be which one? 9. Yes. So 9 will be the point at which, in this case, the equilibrium condition will be at this point 9. Okay. So this is how it works. Now the next one. Demand will decrease or demand will increase in this case? Demand will decrease. Why demand will decrease? Demand will decrease and supply will increase because technological advancement हो गया तो supply बढ़ जाएगी. Supply बढ़ गई from S1 to S2 and the demand will decrease. Why demand? Complementary good है ना. If it is a complementary good, what happens in the case of complementary good? Complementary good goes hand in hand. The price of complement good buy declines. The price of a complement good buy declines. So why decline? Achha, why the price of complement good buy declines? Okay, so in this case, Y is declining. Okay, price कम हो रहा है. Price of Y is decreasing. Okay, since the price of Y is decreasing, the demand for good Z will increase. Yes, yes. So in this case, I thought कि price is increasing. इसमें price कम हो रहा है, तो demand बढ़ जाएगा. So the demand will increase, and this will be 0.7. Okay, this will be 0.7, not 9. Because इसमें demand बढ़ जाएगा ना, point will be 7, not 0.9. Okay, so this is good. Good, Sohail. So basically in this case, demand will increase, and reason being, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम हो रहा है तो दैट मीन्स डिमांड अदर गुड का बढ़ जाएगा. सो इसीलिए डिमांड विल इंक्रीज फ्रॉम D1 to D2 एंड सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज फ्रॉम S1 to S2. सो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट विल बी एट 7. ओके, सो पॉइंट विल बी 7. Then next one. Heavy rains in Maharashtra during 2005 and 6 caused havoc with rice crop. अब सप्लाई, ये सप्लाई का फैक्टर. So supply function says what? Price of the good, जितना ज्यादा इसका प्राइस होगा उतनी ज्यादा सप्लाई होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज द अदर फैक्टर? अदर फैक्टर इज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेदर कंडीशंस. डेफिनेटली अगर आप कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ग्रो कर रहे हैं तो ड्राउट है, फ्लड्स हैं, उसकी वजह से डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है. सो वेदर कंडीशंस, अगर फेवरेबल वेदर कंडीशंस हैं तो supply will increase. If unfavorable conditions, then supply will decrease. So heavy rains in Maharashtra have, so rice crop
So that means supply of rice will decrease. So supply will decrease. What point is the figure about? So in this case, they are not talking about demand. इसमें demand की इन्होंने बात नहीं की है, demand के factors की. So demand curve same रहेगा, supply इसमें कम हो जाएगा. Okay. So what will be the graph in this case? This is the initial demand and this is the initial supply. That is D1 and S1. Now what will happen? Supply will decrease. Supply will decrease. Demand में कोई change नहीं होगा. Okay. So this will be the new equilibrium. Now look at the graph here. अब इस ग्राफ को देखिए. Now in this case, what is happening? Demand is not changing. Demand रहेगा आपका D1 और supply इसमें decrease हो जाएगा. Supply will decrease. So you will move from 1 to 8. So you will move from 1 to 8 because वो supply कम हो गया, but demand आपकी same curve पे है. This is your demand curve and the supply has decreased. Sorry, supply has decreased. It will be at 3 because supply has decreased. So you will be at 0.3 rather than at 8. Okay, so this will be the new equilibrium because supply कम हो गई ना. अगर आप S2 पे जाते तो supply increase हो जाती. Since bad weather conditions has resulted in decrease in supply, so point will be 3 rather than 8. Okay, अगर favorable weather conditions होती तो 0.8 होता. Since it is unfavorable weather conditions, so point will be 3. Okay, so this is how it helps you to understand that whether the product will be quantity, demand, and price. Okay, then fourth. Now the fourth one says that assume that consumer expects the price of new car to significantly increase. अब ये concept कौन सा है? ये concept है that the quantity demanded is a function of price of the good, price of related goods, taste and preference, and expected future price. As a consumer, how do you behave? आप कैसे behave करते हो जब आपको लगता है कि ये जो आप प्रोडक्ट आज ले रहे हो इसका प्राइस कल को बढ़ जाएगा, तो आप क्या करते हो? जैसे आपको लगता है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप क्या करते हो? कल से पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप क्या करते हो? जाके आज ही टैंक फिल करा लेते हैं क्योंकि कल से तो प्राइस पेट्रोल का बढ़ जाएगा. हाउ डू यू बिहेव व्हेन यू सी द प्राइसेस आर गोइंग अप और व्हेन यू एक्सपेक्ट दैट द प्राइस आर गोइंग टू गो अप? आप क्या करते हो उस समय? तो आप देखो लोग अभी इतना ज्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों लेते जा रहे हैं घर? क्योंकि उनको लगता है कल घर और महंगे हो जाएंगे, सो आज ही खरीद लेते हैं. सो दिस इज हाउ. सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू एक्सपेक्ट द प्राइसेस इन फ्यूचर टू गो अप? डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर आपको लगता है कि नई कार्स की प्राइस बढ़ जाएगी नेक्स्ट ईयर तक, तो आप क्या करोगे? इसी साल ले लेते हैं, अगले साल तो और महंगी हो जाएगी. सो द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज. ओके, सो इन दिस केस आर दे टॉकिंग अबाउट सप्लाई? सप्लाई की बात कर रहे हैं इसमें? सप्लाई की कोई बात नहीं है, केवल क्वांटिटी डिमांड की बात होगी. सो डिमांड क्या होगी इस केस में? इंक्रीज हो जाएगी. तो डिमांड विल इंक्रीज एंड सप्लाई विल रिमेन सेम. अब आप इस ग्राफ में देखो, अगर डिमांड बढ़ गई, डिमांड विल इंक्रीज. सो डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम D1 to D2 और सप्लाई रिमेन्स सेम. सप्लाई रिमेन्स सेम. सो यू आर एट दिस पॉइंट एंड द डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम D. आप कहाँ जाओगे? 0.5. यस, सप्लाई आपकी S1 ही है, बट डिमांड क्या होगी? डिमांड इंक्रीज होगी D1 से D2. तो सप्लाई will increase and you will move to the point F. So point F will be the answer for this question. So I hope you understand कि एग्जाम में आपको concept clarity, definitely speculation, yes, speculation. If you expect that prices in future will increase, then definitely you respond. So ये सब questions देख के what is your understanding? What are you understanding? Okay, since yours is a objective paper, you won't get any theoretical, like you will not get कि ग्राफ बनाओ. आपको कोई नहीं बोलेगा कि आई सॉ समवन आस्किंग मी लास्ट टाइम कि मैम ग्राफ कैसे बनाए. ग्राफ को आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना है और अंडरस्टैंडिंग तब क्लियर होगी जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी. सो these questions which are given in this unit
are not exactly correlated with this unit only, also related with demand chapter and supply chapter. जब हमने डिमांड की बात की, हमने डिमांड के डिटर्मिनेंट्स की बात की. सो डिटर्मिनेंट्स, व्हेन वी स्पोक अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का होगा, उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. और वो इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. सो करंट एग्जाम्पल में, अब जैसे बोल दिया महाराष्ट्र में रेन हो गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया, या आप कहें कि गुजरात में फ्लड्स आ गए, या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो गई. सो क्या होगा उसकी वजह से प्राइस पे, इक्विलिब्रियम प्राइस पे. सो यू शुड अंडरस्टैंड ये सप्लाई. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट यू हैव टू डू, you have to first in these kind of questions, my very new thing, suggest some way for. Time is permitting. Can I ask question for economics as the syllabus is ongoing? The material studies compounded by very new things. See, Chaitanya and all others, आप सबके लिए ये मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी, अच्छे से आना चाहिए. क्योंकि कोई भी क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं होता है ऑब्जेक्टिव्स में. और नंबर टू, बहुत कंफ्यूजिंग होता है. अब जैसे ये क्वेश्चन आपने देखा, ये चैप्टर हमने पढ़ा डिमांड और सप्लाई के रिस्पेक्ट, बट जो क्वेश्चन है इट इज ऑल बेस्ड ऑन ऑल थ्री चैप्टर्स. अगर आपको पहले के चैप्टर्स नहीं समझ में आएंगे तो आप इसको नहीं कर सकते. इसीलिए आपको, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दैट प्लीज रिवाइज प्राइस चैप्टर, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं रखेंगे, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ऑब्जेक्टिव्स में. हो सकता है एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट हो, बट मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस ओनली. सो कॉम्प्लीमेंट गुड्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट गुड क्या होते हैं, सप्लीमेंट गुड और कॉम्प्लीमेंट गुड का प्राइस से क्या रिलेशनशिप है दूसरे गुड के साथ में, सप्लाई में कॉस्ट फैक्टर्स कौन से होते हैं, इन कॉस्ट फैक्टर्स का इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है जो सप्लाई और गुड में इम्पैक्ट करता है, मार्केट इक्विलिब्रियम में एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड होगा तो क्या कंडीशन होगी, किस केस में एक्सेस डिमांड होगा, किस केस में एक्सेस सप्लाई होगा, what will be the factor leading to excess demand, excess supply? If there's excess demand and excess supply, will it be always excess demand and excess supply? या फिर वो equilibrium पे आ जाएगा वापस? Will it come back to the equilibrium position or not? If yes, how will it come back to the equilibrium position, price or not? Okay, so you have to ask questions to yourself. Ask questions to yourself कि अगर ये ऐसा है तो क्यों? Things will become more easy for you to understand. Economics में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट. उसके बिना आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते. इफ यू विल डू, एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट यू विल लूज मार्क्स आल्सो. सो प्लीज डू टेक इट ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट. जब हमने इक्विलिब्रियम, सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम, अब इस चैप्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है के लिए, कि नंबर वन, ये जो डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, एम आई राइट? सो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई में इक्विलिब्रियम कहाँ होगा. अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि द प्राइस ऑफ द गुड इज, price of the good is let's say 50 rupees and quantity demand is 100, quantity demanded is 100 units, okay, and the quantity supplied price is 100, quantity demand and quantity supplied is 150 units. अगर ये क्वेश्चन दिया आपको कि प्राइस गुड का 50 रुपीज है, क्वांटिटी डिमांडेड 100 है और क्वांटिटी सप्लाइड 150 है, इफ यू आर अ प्रोड्यूसर, अगर आप इस गुड के प्रोड्यूसर हो, नंबर वन, is it a equilibrium price? Number two,
Number two, how to bring it to the equilibrium price. How you will work to bring it to the equilibrium price. क्या करेंगे आप इस केस में? What will be your answer if this is a scenario given to you? अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एक गुड का प्राइस 50 रुपीज है, उस गुड की क्वांटिटी डिमांडेड 100 यूनिट्स है, क्वांटिटी सप्लाइड 150 है. इज इट इक्विलिब्रियम? इज इट इक्विलिब्रियम? व्हाट विल बी योर आंसर? इज इट इक्विलिब्रियम? No, it is not equilibrium. Why is it not equilibrium? Because this case में quantity supplied, इस case में quantity supply is greater than quantity demand. That means इसमें क्या है? Excess supply. Is it equilibrium price or not? आपको दो तीन ऑप्शन दे देंगे, excess supply, excess demand, or excess demand and excess supply, or uh, none of the above, or all of the above. Then how will you decide about which is the correct answer? How will you decide? जब तक कि आप इसको समझेंगे नहीं कि इस केस में क्या दिया इन्होंने. इस केस में इन्होंने इंपॉर्टेंट चीज हमको बताई है कि डिमांड कितनी है, प्राइस कितनी है, क्वांटिटी सप्लाई. एंड वी नो सिंस दिस इज एक्सेस supply. So if you are a producer, what will you do in this case if you are an excess producer? If you are a producer और आपको पता है excess supply है, so आपने surplus production कर लिया, आपको पता है कि market में demand मेरे product की कम है because the price I'm putting is 50 rupees. Some consumers are not able to buy it at 50 rupees. What will I do? So what will you do? You as a producer, options can be आप price increase करेंगे, आप price डिक्रीज करेंगे, आप प्राइस चेंज नहीं करेंगे, और यू विल गो फॉर like none of the above or all of the above, none of the above. So if these four options are given, what will be the correct answer in this case? आप ये सिनेरियो दे दिया है and then they are asking you, so what will be your answer? Since you first is that there is excess supply, since there is excess supply, so हमने कॉन्सेप्ट शेयर किया excess supply का, ये वाला ग्राफ. Excess supply, so here is what आप यहाँ हो, excess supply है, so what you have to do, you have to decrease the price. Once you decrease the price, quantity supplied will decrease, quantity demand will increase, and you will be at breaking. So this concept here, ये जो ग्राफ हमने अभी शेयर किया, इसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करके आपसे पूछ लिया. And if you're not able to answer, that means you do not know, you do not have concept clarity. So concept clarity तभी आएगी जब आप क्लास में अटेंटिव रहेंगे, आप चीजों को समझेंगे. इसीलिए आपके लिए क्लासेस अरेंज किए हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए. अदरवाइज आप बुक से बार 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 पढ़ेंगे, you will be taking time and it will be very difficult for you to comprehend things. So that's why it's very important to attend the class and understand the basics. आपका टाइम जब पढ़ेंगे चीजें आपके लिए 100%, it will take only 15-20 minutes to comprehend things. Otherwise, it will take too much of time. Okay. So ऐसे questions आपको आने चाहिए. अब जैसे इसमें दिया है simultaneous change. If they say that there's simultaneously, अगर मैं आपसे question पूछूं, and if I give you this graph here, let's say I've given you this graph here. This is the demand and this is the supply. And if I say the demand as the price of substitute good increases, what will be the impact on equilibrium price? Price of substitute good increases. So this is the demand of one good, and we are talking about the price of the substitute good. What will be your answer? Price of the substitute good increases. And the second question is that
if income of yours increases, income of a consumer increases, and this is inferior good. So what will be the impact on demand of the good? What will be the impact on demand of the good? Anyone? Anyone would like to share? Equilibrium price increases, demand will decrease for inferior good when income increases. Absolutely. अब inferior good है तो demand उसकी product की कम हो जाएगी. So अगर आप graph बनाएंगे, so this is the demand of the good and this is the supply of it. And since it's inferior goods, the demand will decrease. And आपको इसमें supply के बारे में कुछ भी नहीं कहा. So your what will happen in that case if this is the price and quantity exchange, then this price and the quantity exchange will decrease. Reason being you will move to the lower demand. So this you should know about. Okay, अगर substitute good का price बढ़ गया, so what will happen to the demand here? Substitute good price increases. Demand of this good will increase now. The demand of this good will increase. And respectively, price will increase and the supply will also substitute. So you have to understand the basic concept that how it makes difference in terms of price of the good and the quantity exchange. Okay, so that's the only way to learn substitute good. टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गया, कोई टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में, देन व्हाट विल हैपन? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, suppose the country is you are using some technology and that becomes obsolete, उस केस में क्या होगा? सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई will decrease. And if government offers subsidies, what will happen in case of government offering subsidies? So if I ask you that government is offering subsidies on production of solar panel, so government अगर subsidies offer करी solar panel पे, so what will happen? Supply will increase, supply will decrease, supply will remain same, or there will be you can't say. What will be your answer? If government offers subsidy on solar panel, solar panel पे अगर government subsidy offer कर रही है तो क्या होगा price पर? Impact. Production supply पे क्या impact होगा? गवर्नमेंट सब्सिडीज ऑफर कर रही है, और प्राइस पे क्या इम्पैक्ट होगा उसका, सब्सिडीज का? एनीवन? सब्सिडीज. सो हमने अभी ये ग्राफ देखा है यहाँ पे, if government offers subsidies, then what happens because of subsidies? सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी, प्राइस आपकी कम हो जाएगी, क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी. यस, व्हाई सो? If the government is offering subsidies, why so? Price will decrease, supply will increase, and quantity exchange will also increase. So subsidies results in, what is the impact of subsidies on the production? Subsidies reduces cost. Cost is the component of supply. अगर subsidies की वजह से cost कम हो गई तो supply बढ़ जाएगी. Once supply increases, cost decreases. That means the overall price will reduce. Overall price reduces and quantity exchange will also. So consumers will gain because of subsidies offered by the government. इसीलिए government subsidies offer करती है. अगर taxes will have reverse impact. Tax की वजह से cost बढ़ जाती है. Cost की वजह से supply will reduce. What will happen to the price? Price will increase. Quantity exchange will decrease. So you should know the implications here.
कि क्या फैक्टर्स हैं, किसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड रिस्पेक्टिवली यू कैन मेक द ग्राफ एंड एनालाइज दैट। वैसे तो ये चैप्टर बहुत सिंपल लगता है, बट क्वेश्चंस कैन बी वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप कैसे उसको अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एंड टू कंक्लूड विद, ग्राफ बनाइए, मेक ग्राफ्स, अंडरस्टैंड, रफ में ग्राफ बनाइए एंड अंडरस्टैंड कि किस कंपोनेंट पे किस पैरामीटर का इम्पैक्ट पड़ेगा, विच कंपोनेंट इज गोइंग टू बी making impact on which parameter. Will it be demand? Will it be supply? If demand and supply together, then to what extent on price, to what extent on quantity exchange, and then you draw the conclusions and be 100% sure what you say or what you write. It's always better to draw graphs. So what we have shared, that prices are always expressed in terms of exchange value. In the market, it's all about money and the exchange of the goods. That only governs value. Okay. In the competitive market, what happens? There's exchange between goods and services because of the demand and supply. The demand creates utility for the consumer, and supply creates incurs cost and creates revenue for the producer. इक्विलिब्रियम प्राइस को हम क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं, बिकॉज इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड जो कंज्यूमर लेना चाहता है, दैट प्राइस, the supplier is ready to supply that quantity at that price, and there's no excess supply or excess demand. उस केस में कुछ भी अनसोल्ड स्टॉक नहीं होगा और excess demand, unmet demand नहीं होगी. Both the factors will be fulfilled. Okay. Equilibrium, why do we say equilibrium is stable? Because if there is any fluctuations with respect to equilibrium, price चाहे higher हो या low हो, उस केस में हमेशा it will come back to the initial position. So, okay, so that is why in this case, equilibrium price will help. Stable price क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर price ऊपर गया, नीचे गया, then it will come back to the initial price. It will not stay on the higher side. It will not stay on the lower side. So this is how the market works. If there's surplus, then in that case, firms will offer discounts or will decrease the price. If there is shortage, then firms will increase the price, and respectively, the supply will increase in the market. Okay. So what happens with the change in the demand and supply, you know about. If the demand decreases and the supply remains same, what is the impact of that equal price and quantity? अगर supply change हो रही है और demand बिल्कुल भी change नहीं है, हो रही है, उसका impact क्या पड़ेगा? That also we have shared. So if both of them both changes together, then what is the impact of that? So this also we have shared. दोनों increase होंगे, दोनों कम होंगे, what extent and to what extent they will change. That impact also we have shared. We have shared the example also given in your book. I have given you some other thought-provoking questions also to think over. So that's it for today's class. If you have some questions, I can take. Otherwise, I'll wind up for this. Any questions if you have? Since we have time today, 5 minutes, so you can ask questions if you want to clarify any doubts with respect to any of the chapters which we have covered. पिछले चैप्टर्स में आपको कुछ नहीं समझ में आया, कुछ क्वेरी है आपकी, want to address that, you can raise that. I'll take care of that because we have some time at hand. Any queries you have? कुछ डाउट्स हैं आपके पिछले चैप्टर्स के? Please please send your message through portal only. I'm not going to address any of the queries through chatbot box, or this you have to share through this query box soon. Any doubts if you have? Any doubt anybody's having? So I can't see anybody posting their queries on portal. So we'll wind up for the day. Keep reading and keep learning.
Okay, then take care of. So, hello. हाँ